हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए आज आपको लेकर चलते हैं नेहरू प्लानिटेरियम जो कि है दिल्ली में। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ कि आपको वहाँ कैसे जाना है और अबाउट टिकट्स एंड एवरीथिंग। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो प्लानिटेरियम के लिए ना आपको टिकट लेनी होती है। यहाँ पर 2D और 3D दो तरह के शोज़ चलते हैं। तो हम जिस टाइम पहुँचे थे तो 2D शो का ही टाइम था, इसलिए हमने 2D की टिकट्स ली। बट इफ़ यू वांट टू वॉच 3D तो आप 3D की टिकट्स ले सकते हैं। और टिकट्स जो थी वो बड़े लोगों के लिए 100 रुपीज़ का टिकट था एंड चिल्ड्रन के लिए 70 रुपीज़ ईच। तो हमने फटाफट से टिकट लेके एंटर कर लिया है और एंटर करते ही बहुत सारा कुछ साइंस का अच्छी अच्छी चीज़ें अबाउट दी प्लैनेट्स एंड एवरीथिंग बनाया हुआ है। बहुत अच्छा अच्छा, जैसे कि मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर विक्रम लैंडर भी बनाया हुआ है इन्होंने और प्रज्ञान रोवर भी बनाया हुआ है। तो ओवरऑल बच्चों के सीखने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए। अगर आपके बच्चों को भी सैटेलाइट्स एंड प्लैनेट्स एंड एवरीथिंग इन सब में इंटरेस्ट है तो ये बहुत ही अच्छी जगह है आपके बच्चों को लेके जाने के लिए, उनकी नॉलेज को बूस्ट करने के लिए। चलिए देखते हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर डॉपलर इफ़ेक्ट और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें साइंस से रिलेटेड यहाँ पे शो करी हुई हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। आप यहाँ पे करके भी देख सकते हैं, थोड़ा बहुत है कुछ वर्किंग में भी चीज़ें। और एक स्पेशल चीज़ है, यहाँ पर दिन में तारे देख सकते हो आप। दिन में तारे से मेरा मतलब है कि यहाँ पर ना आपको दो होल्स दिए हुए हैं। उस होल्स के थ्रू अगर आप अपने आईज उस होल में रख के देखेंगे तो आपको ना बिल्कुल ऐसे नाइट डार्क सीन दिखाई देगा और उसके अंदर आपको तारे छोटे छोटे दिखाई देंगे, बिल्कुल नाइट स्काई के अंदर तारे दिखाई देंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वो जगह। तो ये वो प्लेस है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। और दिन में तारे देखने हैं तो ज़रूर आइए और दिन में तारे देख कर जाइए। बहुत ही अमेजिंग जगह है ये और एक बहुत सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ का कि यहाँ पे आप दिन में भी तारे देख सकते हो। वेलकम टू प्लानेटरी वर्ल्ड। और तब तक मैं आपको ये बताती हूँ कि हम यहाँ कैसे पहुँचे। तो यहाँ पहुँचने के लिए जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है उद्योग भवन और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। आप दोनों में से कोई भी मेट्रो स्टेशन यूज़ कर सकते हैं। मेट्रो स्टेशन से यहाँ प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए डायरेक्ट बसेस चलती हैं जो कि 10 रुपीज़ इसका टिकट होता है। मुझे उसके बारे में पता नहीं था तो मेरे को ऑटो वाले भैया ने पागल बनाया और मुझसे 150 रुपये लिए उन्होंने वहाँ तक छोड़ने के। बट जाते हुए वापस मुझे पता लग गया था तब तक कि हम यहाँ बाय बस भी आ सकते हैं। तो जाते हुए वो मुझे पागल नहीं बना पाया और मैंने 10 रुपये की टिकट लेके पूरा फ़ायदा उठाया बस का मेट्रो स्टेशन तक जाने के लिए। नेहरू प्लानिटेरियम और जो प्रधानमंत्री संग्रहालय है ये दोनों बिल्कुल साथ साथ हैं। आप किसी भी एक जगह जाके अंदर से ये एंट्री दूसरी जगह भी ले सकते हैं। हालांकि टिकट दोनों की अलग अलग हैं, पर हम पहले प्लानिटेरियम आए थे और उसके बाद हम अंदर से सीधा प्रधानमंत्री संग्रहालय भी चले गए थे। तो फूड कोर्ट जो है वो प्रधानमंत्री संग्रहालय में, यहाँ पर फूड कोर्ट नहीं है, तो कुछ खाने के लिए आपको वहीं जाना पड़ेगा। शो के लिए जो क्यू था वो काफ़ी लंबा था, तो जब तक हम क्यू का पार्ट थे तब तक बाकी सारी मैं आसपास की चीज़ें आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा एस्ट्रोनॉट भी बने हुए थे 2 बच्चों के लिए, जहाँ पर बच्चे जा के पिक्चर्स अपनी क्लिक करा रहे थे। और हमारे बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए एस्ट्रोनॉट को देख के और तुरंत दौड़ दौड़ के एस्ट्रोनॉट के पास गए। बट हर जिस बेचारा बड़े वाले एस्ट्रोनॉट से स्ट्रगल कर रहा था कि मैं यहाँ पिक्चर क्लिक कराऊँ, बट उसका फेस ही ऊपर नहीं आ पा रहा था। तो ही गॉट अ बूबू इन दैट सेंस वहाँ पर। एंड तब तक कि हमारी क्यू आगे चली गई थी और अंकल हमें बोल रहे थे फटाफट चलो चलो जल्दी चलो। तो लेट्स गो। ये जो शो होता है वो 40 मिनट्स का होता है। और मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आपके बच्चों को बिल्कुल भी प्लैनेट्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आप उन्हें मत लेके जाइए, क्योंकि बच्चे रोते हैं तो बाकी लोगों का मज़ा भी ख़राब होता है। अगर आपके बच्चे को सच में इंटरेस्ट है तो आप लेके जाइए। और यहाँ से हमारा शो स्टार्ट हो रहा है, चलिए देखते हैं। ये जो शो है ना बिल्कुल स्काई की तरह दिखाते हैं, मतलब आपको ऊपर बिल्कुल स्काई की तरह जो छत होती है, जो रूफ होती है, वहाँ पर पूरा शो चलता है, वीडियोस चलती हैं और ऑडियो साउंड्स आती हैं। तो आपको ऊपर फेस करके पूरा शो देखना पड़ता है। चलिए आपको कुछ ग्लिम्पसेस मैं दिखाती हूँ। A bit to the north, look at these stars. This is in the form of a bear, the Great Bear or Saptarishi Mandal. If we join these two stars of the Great Bear and follow them towards the north, we reach the pole star, Polaris or Dhruv. Pole star is located in another constellation known as Ursa Minor or Little Bear. Now these are the 3 tail stars of Great Bear. If we join these 3 stars or Simha Rashi,
To the east of Leo is the constellation Virgo or Kanya. Now look at this bright object in this region. This is not a star, but a planet, Saturn or Shani. Saturn is the second biggest planet in our solar system. It has rings that can be seen even with a small telescope. Saturn, along with 7 planets, go around the Sun. Our planet Earth is one of them. All these are part of our solar system. We hope that you will try to take some time out and look at the sky and try to figure out some of the lovely constellations that you have recognized today. Thank you. Oh, wow. The earth is spinning. The Because earth. Earth revolves around Sun. I know, but it spins. I know. More than 400 years ago, a middle-aged professor of mathematics and astronomy, who also happened to be a genius, took his first look at the sky through a telescope he had built by hand. Recently, spyglasses had been invented to magnify things in the distance. He was shocked to find 4 small stars around it, which no one had ever seen. The next night, the stars had changed position. Mysterious glowing streak in the sky, known because of its dim white appearance as the Milky Way. It's away. Maybe Galileo could finally figure out what it was. It was made up of countless stars too faint to be seen without a telescope. Galileo realized that they were suns like our own, but much, much farther away. Today we have built larger telescopes that can see thousands of times farther than Galileo's. This image was taken by one of our most remarkable telescopes. It's not on Earth though, it's in space, where the view is not hampered by clouds, pollution or the atmosphere. The Hubble Space Telescope. Through it, we've seen things in the universe that are breathtaking. Because of our technology, we understand a lot more than Galileo could. But there remain great questions. How did the universe begin? What is it made of? How big is it? How many stars are there? What is the future of the universe? Scientists believe they have solved some of these questions, but some they haven't yet. The universe is the greatest of all mysteries, and the answers that will unlock its secrets await new discoveries, perhaps by future scientists watching this show right now. As far as we can see in every direction, it is a place of bitter cold and blazing fire. It is beautiful. What exactly is the universe? As far as we know today, it encompasses everything that exists, from tiny atoms to the whole Earth, to the sun and other planets, to the trillions of stars and the billions of galaxies. The universe is all things everywhere.
also an immense mystery, a source of wonder throughout human history. Across the ages, some of our greatest minds have offered theories about the nature of the universe, often expanding on the ideas of those who preceded them. Planet. Today's story of the universe might appear strange to the great astronomers of the past. Vishwamitra in India, Ptolemy in Greece, Aryabhat in India, Copernicus in Poland, and Galileo in Italy. What's your name? बाबू तो वही में चलते हैं बस That it has always been around. Present-day science estimates that the universe is about 14 billion years old बाबू वो चल and suggests that it exploded into being in a Big Bang. According to this theory, all of the matter in the universe may have been concentrated in a single object no larger than a marble. ऊपर देखो तुम Suddenly, for a reason we don't yet know, it blew up, becoming a universe unbelievably hot and expanding, and then gradually cooling down. When it was born, it was all energy and gravity, the force of attraction, and some of this energy turned into what we know as matter. जैसे गेट ओपन होगा ना वैसे चलेंगे जैसे गेट This primordial matter gave birth to the elements. Hydrogen and helium were formed in the first 30 minutes or so. आओ आप आइज क्लोज कर लो As stars later formed, they produced the other elements. That's why it's just going here. After expanding and cooling for millions of years of its infancy, the universe entered the equivalent of its early childhood. A lot of interesting things began to happen. The attraction of gravity brought some of the matter together into immense clumps, here and there. These clumps of gas and dust eventually collapsed and became galaxies. What's your name? बाबू तो वही में चलेंगे The hydrogen and helium gases in the galaxies broke up into smaller clouds. From these clouds, the first stars in the galaxies were born. Most of the stars that formed early were supermassive, but they lasted just a few million years, then blew up in catastrophic explosions called supernovae. What's your name? बाबू तो वही में चलते हैं Inside the hot interiors of these massive stars. आओ तो मेरे पास When they exploded, those elements were flung out into the extreme. Today, we know that the sun itself is but one star among 400 billion stars that make up our Milky Way galaxy. Milky And Way. that our galaxy, though composed of hundreds of billions of stars, can seem insignificant when we realize that it is just one among hundreds of billions of galaxies in the universe. Our Milky Way galaxy formed about 1 billion years after the Big Bang, making it some 13.2 billion years old. The most ancient stars within it are about 10 billion years old, and the youngest are just a few million years old. In fact, baby stars are being born even today. Our sun is a middle-aged star, 4.5 billion years old. It was born from a cloud of gas and dust, which we call a solar nebula. ऊपर देख सन देख The birth of the sun was brought about by the explosive death of a nearby star. सन कहाँ पे Shock waves from the explosion of the dying star triggered the formation of the solar system. Oceans that covered Earth. Ocean. ऊपर देखो पहले
Another 500 million years passed and some primitive forms of life appeared, such as blue-green algae. सब चलेंगे बेटा सब चलेंगे Another 500 million years, and bacteria and simple plants had arrived. Then, over billions of years, more and more complex organisms evolved, first in the sea and later on land. कहाँ रहते हैं Eventually, some 200 million years ago, the gigantic animals we call dinosaurs dominated Earth, only to disappear about 70 million years ago, probably as a result of climatic changes caused by the crash of a large asteroid, setting the stage for the rapid evolution of mammals, foremost among them humans, who began to shape nature itself. Our ancestors made stone tools, used fire, and learned to farm. बस चल थोड़ी देर और दे दो बस चल रही है ओके सब साथ में चलेंगे राइट से ओके From wanderers and gatherers, we became settlers. बस थोड़ी देर दे दो बेटा As life became easier, people had a lot of time to look at the sky. In the apparent random distribution of stars in the night sky, our ancestors imagined familiar shapes and patterns, which we call the constellations. 5 minutes गिले Today we recognize a total of 88 constellations that encompass the entire sky. 12 of these are called the zodiacal constellations. वो क्या है Together, they form a belt running across the sky. The sun, the moon, and the planets appear to travel through the belt of the zodiac. ये जो ऊपर ये है दिख रहा है ये इसका वहाँ पे क्या है One of the most conspicuous constellations seen in the winter sky is Orion, the hunter. A little to the west is the celestial bull Taurus, a zodiac constellation. Taurus appears देखो लाइट हो गया ना आप सब चल रहे हैं ओके रो मत बाबा भाई ने भी परेशान कर दिया ना बना As biologist and author William Huxley said, there may be other beings in this vast universe endowed with reason, purpose, and aspirations, but we know nothing of them. So far as our knowledge goes, the human mind and personality are unique and constitute the highest product yet achieved by the cosmos. भाई भी जा रहे हैं वो भी जा रही है Man is that process of reality, said Huxley, in which and through which the cosmic process has become conscious and has begun to comprehend itself. As Huxley suggests, the universe does not exist out there independent of us. We are inescapably involved in what appears to be unfolding before us. We are small participants in a universe of extraordinary scale. Our future as a species is intimately connected with the future evolution of the universe. 5 minutes देखो ये 34 पे ना 40 पे आते खत्म ओके अब आएगा ना 40 पे अपने In coming centuries, climate on Earth may change drastically. आप देखते The continents which are drifting apart may one day collide with each other, destroying old mountains and creating new ones where none existed before. 35 हो गया 40 आते हैं 40 पे आते हैं हम चलेंगे गेट हाँ गेट खोलेगा हम जाएंगे अब A huge asteroid could hit the Earth, as happened in the age of the dinosaurs. Some stars may die in the neighborhood, and some new ones may be born. बस बेटा
35 है ना, हमने कहा ना 40 पे आते ही हम चलेंगे, ठीक है ना, टाइम पे 40 पे आते ही हम चलेंगे, ओके। After billions of years, the sun itself may expand into a red giant, engulfing the earth and beyond. In the past, some astronomers theorized that our expanding universe might eventually slow down, ओनली halt, 40 नहीं रोते and नहीं है, begin to मेरे भाई collapse. के साथ मेरे भाई के साथ चलेंगे, चलो अस्सलाम बस थोड़ी देर रुको, 3,000 million. गेट खुलेगा, सब जाएंगे, But that theory may be in question because of the recent discovery of what astronomers call dark energy and dark matter. We don't know exactly what they are, but we know they make up a large part of the universe, and discovery suggests that the universe is not just expanding but accelerating. ठीक है ना, बस 5 मिनट, 5 मिनट बेटा, 5 हमें चलिए था हमारा शो जिसको देखने के लिए हम गए थे, और अब हम यहाँ से बाहर एग्जिट लेके प्रधानमंत्री संग्रहालय की तरफ जा रहे थे, और रास्ते में हमें बड़े सुंदर सुंदर 2 मोरों का जोड़ा दिखाई दिया। तो मोर आगे आगे और मोरनी उसके पीछे पीछे जा रहे थे, जो कि देखने में बड़ा ही मज़ा आया हमें, और मैं आपको भी दिखाती हूँ, देखिए वीडियो में ये मोर आगे जा रहा है और मोरनी उसके पीछे जा रही है। आई एम नॉट श्योर हु इज़ मोर एंड हु इज़ मोरनी, बट एक मेल एक फीमेल तो है फॉर। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और प्लान करके अपने दोस्तों के साथ और अपने बच्चों के साथ नेहरू प्लानेटेरियम देखने ज़रूर जाएं, और प्रधानमंत्री संग्रहालय भी देखने जाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।